हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपेली आकृतिनी अंदर कोईपण सदिशने तेना घटकोनी अंदर विभाजन करवुं होय तो कई रीते करी शकाय ते समजवानुं छे। बराबर। एक्स अने वाय परिमाणमां सौप्रथम आपणे समजीए एटले के 2D मां समजीए, 2 डायमेंशनल में, द्विपरिमाण में, पछी आपणे त्रिपरिमाण में समजीशुं। तो अहींया पहला तो एक सदिश आपने उगम बिंदुना सापेक्षे अहींया ए सदिश लीधेलो छे। बराबर। आ एनी पुच्छ छे, आ एनुं शीर्ष छे। तो एक्चुअल में घटकोना विभाजन एटले शुं थाय के आ सदिश छे ए बे घटकोमां विभाजित थाय एवुं कही शकाय। आनो પડછાયો बे अक्ष पर पड़े। आनो પડછાયો एक्स अक्ष पर पड़े एनो घटक आपणे A1 लीधो छे ने आनो પડછાયો जे y अक्ष पर पड़े एनो घटक आपणे A2 लीधेलो छे। तो लखीए अहींया आकृतिमां XY समतल में सदिश ए दोरेल छे जेना बे घटको A1 अने A2 अनुक्रमे X अने Y अक्ष पर छे। बराबर। हवे A1 अने A2 बे घटको छे तो ए घटकोने केवी रीते दर्शावी शकाय, एना मूल्यना स्वरूपमां दर्शाववुं होय तो फरी एकवार एवी ज आकृति ड्रो करीए। तो अहींया आपणी पासे ए सदिश छे, अहींया उगम बिंदु छे। बराबर। तो आ घटक छे एने तमारे दर्शाववुं होय तो कई रीते दर्शावी शकाय। तो आ एक्स अक्षनो घटक छे एटले ए पछी एक्स नीचे लखवानुं अने आपणे कीधुं हतुं के एक्स अक्षनी दिशानो एकम सदिश एटले शुं थाय आई कैप। पछी अहींया ए अने वाय लखवानुं अने वाय अक्षनी दिशानो एकम सदिश एटले शुं थाय जे कैप। तो A1 छे एने तमे AXI वडे थोड़ुं नीचे करी दईए। A1 छे एने AXI वडे। बराबर। अने A2 छे एने AYJ वडे दर्शावी शकाय। तो अहींया A1 बराबर AXI कैप अने A2 इज इक्वल टू AYJ कैप। बराबर। बे घटको थई गया अपनी जोड़े। A1 बराबर AXI कैप अने A2 इज इक्वल टू AYJ कैपना स्वरूप में आपणे दर्शावी शकीए। बराबर। तो आ बे घटको छे एने टोटल ए सदिश वडे मारे दर्शाववुं होय तो ए सदिश बराबर शुं थाय A1 सदिश प्लस A2 सदिश। कारण के ए सदिश छे ने बे घटकोमां आपणे डिवाइड करेला छे A1 प्लस A2 मां। बराबर। याद राखजो अहींया AXI कैप छे एमां AX छे सदिश नथी, सदिशनो घटक छे, एक्स अक्षनी दिशानो घटक छे अने I कैप शुं छे एनो एकम सदिश। सेम एवी रीते AY ए शुं छे कोई सदिश नथी, ए सदिशनो घटक छे अने जे कैप शुं छे एनी दिशानो एकम सदिश एटले Y अक्षनी दिशानो एकम सदिश। तो A1 छे एनी जग्याए तमे AXI कैप लखी शको अने A2 छे एनी जग्याए AYJ कैप लखी शकाय। बराबर। तो A बराबर आपणी पासे सूत्र आव्युं AXI कैप प्लस AYJ कैप। बराबर। बे घटक में आपणे एनुं शुं कर्युं रूपांतरण कर्युं एनुं। बराबर। हवे आनुं विभाजन एक्स अने वाय अक्ष छे एना स्वरूप में आपणे कर्युं छे। तो AX घटक छे। बराबर। अहींया आपणे जे आकृति दर्शावी हती। बराबर। अहींया जो थीटा मापनो खूणो बनावे एक्स अक्ष साथे के नीचेनी आकृति में आपणे थोड़ू चर्चा करिए तो आ ए सदिश छे ए एक्स अक्ष साथे जो थीटा मापनो खूणो बनावे। बराबर। तो एना बे घटको लई शकाय AX अने AY। एने साइन अने कोसना स्वरूप में पण दर्शावी शकाय। तो AX घटक छे ने आ रीते लखाय AX बराबर A cos थीटा
અને AY બરાબર A sin થીટા. x અક્ષની દિશાનો ઘટક cos થીટા અને y અક્ષની દિશાનો ઘટક sin થીટા. એક લોજિક યાદ રાખજો, અહીંયા હું સમજાવું છું તમને ફરી એકવાર. આ y અક્ષ છે, આ x અક્ષ છે. આ લોજિક જ્યાં સુધી આપણે ભણીએ ત્યાં સુધી બધા જ ધોરણમાં અને બધા જ ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ બધે યાદ રાખજો. અહીંયા એ સદિશ આપેલો હોય તો જેની સાથે આ સદિશ ખૂણો બનાવે તે હંમેશા એનો કોસ થીટા ઘટક થાય. જેની સાથે થીટા ખૂણો બને એ ઘટક કોસ થીટા અને એની બીજો ઘટક આવે એ હંમેશા સાઇન થીટા જ થાય. ફિક્સ હોય. જો એક્સ સાથે ખૂણો બને છે એટલે એ ઘટક એ કોસ થીટા અને આ શું થઈ જાય? એ સાઇન થીટા ઘટક થાય. બરાબર? તો મારે એ સદિશને લખવું હોય તો આપને ખબર છે AX I કેપ અને AY J કેપ. જો એના મૂલ્યના સ્વરૂપમાં આપણે લખી દઈએ તો AXની જગ્યાએ A cos થીટા I કેપ અને A sin થીટા J કેપ. યાદ રાખો, જ્યારે મૂલ્ય કરવું છે ત્યારે અંડર રૂટમાં શું થાય? બરાબર? તો A cos થીટા અને A sin થીટા આપણે બે ઘટકો જે મળ્યા છે, બરાબર, એના ઉપરથી તમને બે ઘટકો આના મૂલ્યના સ્વરૂપમાં મળે તો અંડર રૂટમાં પહેલાનો વર્ગ એટલે A સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા અને બીજાનો વર્ગ એટલે A સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા. બરાબર? A સ્ક્વેર તો બંનેમાંથી કોમન નીકળે તો A સ્ક્વેર અને cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા એટલે તો તમે 1 જાણો છો. તો અંડર રૂટમાં A સ્ક્વેર એટલે શું થાય? A. તો જ્યારે તમે બે ઘટકો લીધા કોના AX I કેપ અને AY J કેપ, એનું જ્યારે મૂલ્ય શોધ્યું તો તમને 1 મળ્યું. બરાબર? સેમ તેવી જ રીતે થીટા શોધવા માટે, બરાબર, તો થીટા તમારે શોધવું હોય તો એના માટેનું શું તમને મૂલ્ય આપેલું છે? તો યાદ રાખો tan થીટા બરાબર શું થાય? તો સામેની બાજુ એટલે સામેનો ઘટક કયો થાય? AY અને પાસેની બાજુ એટલે AX. જો અહીંયાથી આપણે જોઈએ અને હું આ રીતે દર્શાવી દઉં તો થીટાની સામેની બાજુ એટલે આ યાદ હોય તો AY ઘટક હતો અને આ કયો ઘટક હતો? AX ઘટક હતો. તો સામેની છેદમાં પાસેની, તો સામેની એટલે AY અને આ પાસેની એટલે AX ઘટક. તો થીટા બરાબર બીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર આવે છે tan ઇન્વર્સ AY છેદમાં AX. બરાબર? એટલે કોઈ પણ સદિશ છે એનું મૂલ્ય તમારે દર્શાવવું હોય તો આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. અંડર રૂટમાં AX નો વર્ગ વત્તા AY નો વર્ગ. તો આ મૂલ્ય થઈ ગયું અને આ એની દિશા થઈ ગઈ. તો કોઈ પણ સદિશનું માન અને દિશા બંને આ રીતે તમે દર્શાવી શકો, જે આપણે તમને પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું. હવે ત્રિપરિમાણમાં લઈએ સેમ. તો ત્રિપરિમાણમાં પહેલાં તો અહીંયા આપણે આકૃતિ આપેલી છે એટલે આકૃતિ સમજીએ. આકૃતિ ખાસ સમજજો. XYZ 3 લેવા પડે. અહીંયા આપણે X અક્ષ લીધો છે, આ Y અક્ષ લીધો છે અને અહીંયા આપણે Z અક્ષ છે. બરાબર? હવે X અક્ષની દિશાનો ઘટક એટલે AX, Y અક્ષની દિશાનો ઘટક AY, Z અક્ષની દિશાનો ઘટક એટલે AZ. બરાબર? હવે X અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે છે આ સદિશ છે આપણો એ સદિશ, તેને આલ્ફા લીધો છે. Y અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે છે આ સદિશ એ બીટા લીધેલો છે અને Z અક્ષ સાથે જે પણ ખૂણો બનાવે છે આપણે ગામા લીધેલો છે. બરાબર? આ AXનું મૂલ્ય છે, આ AZનું મૂલ્ય છે કારણ કે Z અક્ષને સમાંતર છે, આ X અક્ષને સમાંતર છે અને આ Y અક્ષને સમાંતર છે એટલે એ Y ઘટક. બરાબર? તો હવે જે રીતે આપણે દ્વિપરિમાણમાં લીધું હતું એ રીતે ડાયરેક્ટ હવે ત્રિપરિમાણમાં લખીએ
तो त्रिपरिमाण छे एटले एमां 3 घटको आवे। तो ए बराबर शुं थाय? ए एक्स पछी आई कैप लखवानुं, पछी ए वाय एनी जोड़े जे कैप लखवानुं अने जेड नो घटक होय तो के कैप लखवानुं। जो एनुं मूल्य तमे शोधो तो अंडर रूट में डायरेक्ट हवे पहलानो वर्ग प्लस बीजानो वर्ग अने प्लस त्रीजानो वर्ग। जेवी रीते आपणे पहेलामां प्रूव कर्युं एवुं डायरेक्ट आमां लख्युं तो त्रणेयना मूल्य होय एनो वर्ग तमे करो अंडर रूट में एटले तमने कुल जे तमने सदीश आपेलो छे एनुं मूल्य मळे। एक एक्जाम्पल साथे समजावीए एटले थोड़ो वधारे आइडिया आवे। ए बराबर धारो के तमने आपेलो छे 2i कैप प्लस 3j कैप अने प्लस k कैप। जो एनुं तमने मूल्य शोधवानुं के एटले पहेला तो मान करी देवानुं, पछी अंडर रूट करवानुं, पछी पहेलानो वर्ग एटले 2 नो वर्ग करवानुं, बीजानो वर्ग एटले 3 नो वर्ग करवानो अने आनो सहगुणक कंई ना होय एटले 1 तो होय ज एटले 1 नो स्क्वेर करवानो। आ थई गयुं 4, आ थई गयुं 9, आ थई गयुं 1। तो 9 અને 4 13 ને 1 14 એટલે અંડર રૂટ 14 આનો જવાબ આવે। बराबर आ रीते सिंपल तमे मूल्य शोधी शको। 3D में तमने आपेलू होय, 2D में आप्युं होय तो 2 सुधी जवानुं, त्रिपरिमाण होय तो 2 सुधी जवानुं, त्रिपरिमाण होय तो 3 सुधी जवानुं। क्लियर? तो आ रीते तमे 2D અને 3D में कोईपण सदिशोनुं विभाजन ए समजावी शकाय। हवे सदिशोना सरवाळानी बेजिक रीत लईए। धारो के 2 सदिशो आपेला छे, धारो के 2 सदिशो ए सदिश है एना घटक है अपनी जोड़े ए एक्स आई कैप प्लस ए वाय जे कैप। तो बीजो मारे सदिश लेवो होय बी तो सेम केवी रीते थाय? बी एक्स साथे आई कैप थाय अने बी वाय साथे जे कैप थाय। बराबर। हवे आपणे बेजिक सरवाळो करवो छे एटले ए प्लस बी हूँ करूँ तो पहला ए ना घटको एटले ए एक्स आई कैप અને ए वाय जे कैप प्लस बी माटे शुं आवशे तो बी एक्स आई कैप અને बी वाय जे कैप। हवे हूँ अहींया अंडरलाइन करूँ छूँ। आ बंने सरखी निशानीवाळामांथी शुं कॉमन निकळे तो ए एक्स प्लस बी एक्स बंनेमांथी आई कैप कॉमन। आ बंने सरखी निशानीमांथी शुं कॉमन तो ए वाय प्लस बी वाय अने बंनेमांथी जे कैप कॉमन। बराबर। तो एना मारी जोड़े 2 घटक मळे ए एक्स प्लस बी एक्स अने आई कैप अने ए वाय अने बी वाय अने जे कैप। बराबर। हवे आ बंनेनो परिणामी सदिश छे एने धारो के हूँ आर नाम आपूँ तो आ एक्स नो घटक छे एटले आवुं लखाय आर एक्स आई कैप अने आ वाय नो घटक छे एटले आवुं लखाय आर वाय जे कैप। क्लियर? तो आ द्विपरिमाण में तमने बंनेनो बेजिक सरवाळो मळ्यो। 2 सदिशो तमने आपेला होय तो द्विपरिमाण में बंनेनो बेजिक सरवाळो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाय जे कैपना स्वरूप में मळे। बराबर। सेम एवी ज रीते त्रिपरिमाण आपेलू होय तो 3 सुधी जवानुं। तो अहींया लखी दईए त्रिपरिमाण एना माटे केवी रीते गणतरी करशो तो ए सदिश है 3 घटकों लेवानुं ए एक्स आई कैप लेवानुं ए वाय जे कैप लेवानुं अने एक वधारे जवानुं ए जेड के कैप। बी सदिशो है एना बेटा बी एक्स आई कैप लेवानुं बी वाय जे कैप लेवानुं अने बी जेड फरी पाछुं अहींया के कैप लेवानुं। क्लियर? હવે બેઝિક સરવાળો છે એટલે આમાં જે રીતે તમે સરવાળો કર્યો એવી રીતે સેમ ત્યાં પણ સરવાળો કરવાનો થાય। तो ए सदिश प्लस बी सदिश घटको फरी एक बार ए एक्स आई कैप ए वाय जे कैप अने ए जेड के कैप वच्चे सरवाळो
BX I कैप BY J कैप અને BZ K कैप। चलो आ बंनेमांथी शुं कॉमन निकले तो AX प्लस हूँ BX करूँ तो बंनेमांथी I कैप कॉमन, ए रीते AY प्लस BY करूँ तो J कैप कॉमन અને AZ प्लस BZ करूँ तो K कैप कॉमन। फरी पाछो आने हूँ नाम आपू तो पहलो सदिश एनो परिणामी सदिश RX नाम आपू छूँ એટલે RX I कैप RY J कैप અને RZ K कैप અને આને નામ આપી દઈએ આપણે R। તો ત્રિપરિમાણમાં બેઝિક સરવાળો આ રીતે મળી શકે, બરાબર। હવે એવી જ રીતે ABC 3 નાના સદિશો તમને આપેલા છે, બરાબર, અને એના ઘટકો છે ને એનું પણ કરી શકાય। હવે એ આપે તો કેવી રીતે લખવાનું AX I कैप AY J कैप AZ K कैप। बी सदिश आपे तो BX I कैप बीना स्वरूप में लखवाना BY J कैप अने BZ K कैप। सी सदिश आपे तो फरी एक बार CX I कैप CY J कैप अने CZ K कैप। तो A वत्ता B अने माइनस धारो के मारे C करवू छे तो डायरेक्ट शू लखवानुं ए अने बी नो सरवाळो करवानो एटले ए अने बी नो सरवाळो करो तो शू थाय AX प्लस BX थाय डायरेक्ट लखुं छुं अने माइनस C तो अहींया शू थाय माइनस CX कॉमन एनी जोड़े I कैप आवे। सेम एवी ज रीते हवे y माटे तो AY अने BY नो सरवाळो अने एमांथी CY शू थाय माइनस एटले एमां J कैप आवी जाय, बराबर। हवे एवी ज रीते Z माटे तो AZ अने BZ आ बनेनो तो सरवाळो ज करवानो छे। जो ए अने बी में बधामां सरवाळो थाय पण सी माइनस छे एटले बधामां सी माइनस माइनस CZ अने एनी जोड़े के कैप थाय। तो बेजिक सरवाळो कीधुं छे एनो मतलब शुं थाय के एमां सरवाळो पण आवी शके अने बादबाकी पण आवी शके, बराबर। तो इन शॉर्ट आजना लेक्चर में तमारे याद शुं राखवानुं थाय तो एना माटेनुं एक शॉर्ट स्वरूप तमने आपी दઉં जेने आपणे सूत्रना स्वरूपमां याद राखी शकीए कि ए सदिश आप्यो होय अने त्रिपरिमाणमां दर्शाववो होय तो AX I कैप अने AY J कैपना स्वरूपमां दर्शावी शकाय। ज्यारे एनुं मूल्य लेवानुं के तो आपणे साबित कर्युं अंडर रूटमां शुं करवानुं आ पहेलानो वर्ग करवानो प्लस बीजानो वर्ग करवानो अने जो थीटा शोधवानुं के तो tan इनवर्स ऊपर AY राखवानो अने नीचे AX राखवानो अने आज वस्तु त्रिपरिमाण में आपे तो A बराबर तमारे शुं करवानुं तो AX I कैप लखवानुं AY J कैप लखवानुं अने AZ K कैप लखी शकाय। एनुं मूल्य शोधवानुं के तमने तो अंडर रूट में AX नो वर्ग AY नो वर्ग अने AZ नो वर्ग तमे लखी शकाय। आने खास हाईलाइट करजो, हाईलाइटर थी हाईलाइट करजो। कोईपण सदिशनुं मूल्य बराबर अंडर रूट में तेना घटकोनो वर्गोनो सरवाळो अने कोईपण सदिशनुं खूणो कां तो दिशा एवुं पण शब्द वापरे हो, खूणो वापरे के दिशा वापरे बंने एक ज छे। थीटा बराबर tan इनवर्स y घटक छेदमां x घटक एम याद राखवानुं y घटक छेदमां x घटक, बराबर। तो आना उपरथी घणा बधा दाखलाओ जी नीटना एक्जाम्पल बी एटला बधा आवशे, बराबर, अने दाखलाओ पण घणा बधाओ आवशे। एटले मूल्य शोधवानुं अने दिशा शोधवाना दाखलाओमां तमारे खास याद राखवानुं थाय। फरी एकवार थोडुं रिविजन करी लईए। ए सदिश छे ए बे घटकमां विभाजित थाय तेनो एक પડછાયો x અક્ષ पर पड़े, बीजो પડછાયો y અક્ષ पर पड़े। एक्स अक्षना પડછાયાને આપણે A1 नाम आप्युं छे, y अक्षना પડછાયાને A2 नाम आप्युं छे। तो A1 અને A2 एना बे घटको छे એટલે A1 बराबर शुं लखी शकाय तो AX I कैप અને A2 बराबर AY J कैप। पछी बंनेनो सरवाळो करो અને AX એટલે મેં તમને સમજાવ્યું કે જેની સાથે થીટા ખૂણો બને એ હંમેશા cos થીટા લેવાનો। હંમેશા કહું છું એનો मतलब આ ચેપ્ટર પૂરતું નહીં,
ગમે તે ચેપ્ટર આવશે એટલે જે સદિશ સાથે જેનો ખૂણો બનશે એ હંમેશા કોસ થીટા, અને જે ખૂણો ના બને એની સિવાયનો ઘટક એટલે એ સાઇન થીટા. બરાબર, એ ફિક્સ બધા ચેપ્ટર માટે. એટલે એક્સ બરાબર એ કોસ થીટા અને એવાય બરાબર એ સાઇન થીટા, બંનેનો વર્ગોનો સરવાળો કરો, વર્ગમૂળ લો, એનું મૂલ્ય લો એટલે વર્ગમૂળમાં બંનેનો વર્ગોનો સરવાળો, એટલે એ જવાબ મળે. એટલે એ બરાબર તમારી પાસે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એવાય સ્ક્વેર મળે. સેમ એવી રીતે 3 ઘટકો માટે યાદ રાખવાનું. બેઝિક રીત છે, એમાં 2D આપે તો y સુધી જવાનું અને 3D આપે તો z પણ લેવાનો ઘટક, પછી 3 શું કરવાના, ઘટકોના સરવાળા કરવા. બરાબર, ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.